हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल लर्न विथ एपी में। इस चैनल में आपको मिलेगा अलग अलग विषयों पर मल्टी चॉइस क्वेश्चन एकदम केबीसी की तरह। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। आपके कितने उत्तर सही हुए यह हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको और किसी टॉपिक पर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर सजेस्ट करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप्स के साथ देखें और जाने कौन है सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। तो आइए चलते हैं हमारे आज के क्विज की तरफ। Question number 1. A process in which an object becomes smaller or shrinks is called. Option A, chemical change. Option B, irreversible change. Option C, contraction. Option D, expansion. The correct answer is option C, contraction. Question number 2. The change in which chemical properties of a substance change is called. Option A, chemical change. Option B, physical change. Option C, heating. Option D, pressure. The correct answer is option A, chemical change. Question number 3. Which of the following changes can be reversed? Option A, cow dung to biogas. Option B, bud to flower. Option C, wet clothes to dry clothes. Option D, raw egg to boiled egg. The correct answer is option C, wet clothes to dry clothes. Question number 4. Force can cause change in the. Option A, size. Option B, shape. Option C, direction. Option D, all of these. The correct answer is option D, all of these. Question number 5. Which one of the following factors is involved in a change? Option A, force. Option B, heat. Option C, chemical reaction. Option D, all of these. The correct answer is option D, all of these. Question number 6. Which of the following material do not expands on heating? Option A, iron. Option B, wood. Option C, glass. Option D, oil. The correct answer is option B, wood. Question number 7. The meaning of reverse is called. Option A, getting back to starting point. Option B, increase in size or volume. Option C, decrease in size or volume. Option D, a push or pull applied on an object.
The correct answer is option A, getting back to starting point. Question number 8. Which of these changes cannot be reversed? Option A, hardening of cement. Option B, freezing of ice cream. Option C, opening a door. Option D, melting a chocolate. The correct answer is option A, hardening of cement. Question number 9. Which type of change is melting of wax? Option A, chemical change. Option B, physical change. Option C, both of these. Option D, none of these. The correct answer is option B, physical change. Question number 10. What is formation of steam from boiling water called? Option A, reversible change. Option B, irreversible change. Option C, chemical change. Option D, none of these. The correct answer is option A, reversible change. इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए अभी तुरंत हमारे इस चैनल लर्न विद एपी को सब्सक्राइब करें। हमारा मनोबल बढ़ाए रखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। आपको और कौन कौन से टॉपिक पर ऐसे वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करें और देखें किसको कितना नॉलेज है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।